Assalamu alaikum. This is Ram Khan, and today I'm gonna explain you how to unbind with Jesse V1 SE. Uh, this is the version is 16.1.2. This is 11 Pro. The same feature in V1 S Pro and V1 SE had the same feature, which is Jesse release check M check M8. This is just like a jailbreak before, as like we do with Chakra and iOS 14.1, 14.7. So I'm just gonna tell you that no need to purchase Jesse V1 S Pro. Just unbind with Jesse V1 SE. I'm gonna explain the whole procedure. Connect the Wi-Fi through a Jesse platform. Connect a Wi-Fi to the Jesse platform. Okay, the main thing is device should be Wi-Fi upgraded V1 SE with the Wi-Fi upgraded version. Okay, and connect Wi-Fi in the phone, and at the same time connect the phone to the Jesse V1 SE. Okay, and now we're gonna unbind. Watch video till end, don't skip. If you skip, you don't understand how to unbind, the application will be installed. Wait for installation. Okay, install again, because sometimes it's failed because of network. Again, wait for installation. When the application is installed, then we proceed the unbinding. It's getting fail. Okay, we try again. Connect the phone, install again. Wait, let me connect the Wi-Fi again. There's a network issue. Go to the check M8 app. Okay, connect the phone. Connect the phone. Wait for the network. Okay, trust. Wait for network. When it's stable, okay, connect the iPhone 11 Pro 16.1.2. Now unbind. Okay, resource downloading. Wait for it. Sometimes it's failed because of network.
So wait for the network, try again and again. If it's failed because of network, because the device Wi-Fi is 2.4G, that's low connection. No difference in V1 SE and V1 S Pro, because V1 S Pro have two different feature like camera module and unbinding without NAND disorder, and the both feature are in this device V1 SE GC released. So no need to buy V1 S Pro. If you have V1 SE, you can do the same as in V1 S Pro. Download complete. Now the application will be installed on in phone. Okay, the application are installing. Now note the tips. Please complete the following operation on the phone. Please connect the phone to internet Wi-Fi. The phone should be connected to the Wi-Fi and device at the same time. Now go to the setting. Okay, go to the setting, go to the setting journal, and here you can see the VPN and device management, and click on this and trust. Okay, when you trust, now it's gonna jailbreak. Okay, and now it's success. Okay. Mm, now unbind, wait for it. Okay, when it's complete. Okay, if didn't, okay, it's almost unbind. You can check on JC platform. You can check on JC platform. Like, let us connect and check the unbinding. Look, ambient factory unbind, distant factory unbind, Trutune, Latic, radar, each and everything unbind. And this is, look, original. That's mean the unbinding is correct. Okay, now we're gonna bind the third party flex of JC. We want JC through V1 SE. The 11 Pro. Go to repair fitting, connect. Okay, exit the feature. Now we just unbind the new flex. Look for factory unbind. Look, factory unbind ambient and distance or factory unbind. Start testing. Activate, and now check the face ID. This method not only unbind the distance and ambient, is unbind the electric, radar, IR, infrared camera, each and everything. Restart the phone. We're gonna check the face ID. This feature now support iOS 16.1.2, and maybe they release for the latest version too. And the device are supported from access to 14 Pro Max, and this is the same as Chakline before we jailbreak once upon a time. Check the True Tune first. Look, True Tune, and now check the Face ID.
It's done. It's done. सो अच्छा, मैं एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा वो इंग्लिश में था। इंग्लिश में से कुछ यूज़र ऐसे हैं जिनको मतलब उर्दू समझ में नहीं आती और वो मतलब कंप्लेन करते कि आप इंग्लिश में मतलब वीडियो बनाए। अब इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है नहीं वैसे, लेकिन मैंने ट्राई की कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। और उर्दू में मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे यूज़र है जिनको उर्दू समझ में आती है ना, क्लियरली उनको समझ आता है। V1S Pro इसलिए बाय ना करें क्योंकि V1S Pro और V1SE में दो डिफरेंट चीज़ें, कैमरा और अनबाइंडिंग, और दोनों चीज़ें V1SE के अंदर वो जेसी ने रिलीज़ कर दी है। तो V1S Pro बाय ना करें, V1S Pro की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास V1SE है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रोसीजर सेम ही है, सिंपल। आपने क्या करना है, ये चेक लाइन वाला मेथड ही है जैसे हम जेल ब्रेक करते थे पहले। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जाके फ़ोन को जो है ना, अच्छा, डिवाइस और आपका फ़ोन सेम टाइम वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए और आपकी डिवाइस वाईफाई अपग्रेडेड होनी चाहिए, और सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और जाके वीपीएन के अंदर उसको ट्रस्ट करना है। आपने जो चेक M8 की जो एप्लीकेशन है उसको ट्रस्ट करना है। उसके बाद अनबाइंडिंग के बाद सिंपल आपने दूसरी फ्लैक्स बाइंड करनी है। और ये सिर्फ एम्बियंट और डिस्टेंस जो है ना वो अनबाइंड नहीं करता। लेटेक, रडार, ईच एंड एवरीथिंग जैसे आप P13 के अंदर अनबाइंड करते हैं सेम अनबाइंडिंग है। फ़र्क सिर्फ इतना ये iOS 16.1.2 के लिए, और जो अभी मतलब इसकी अपडेट आएगी जो लेटेस्ट वर्जन में। और चेकलाइन में और इसमें जो फ़र्क है जेल ब्रेक में, क्योंकि चेकलाइन सिर्फ आईफोन एक्स तक सपोर्ट करता था और ये सारा 14 प्रो मैक्स तक सपोर्ट करता है ये अनबाइंडिंग। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन भी अभी आएंगे, मतलब कि iOS 16.4.1 की भी अपडेट आने वाली है, तो वो भी बहुत जल्द आएगी। तो मेथड बहुत सिंपल ही है, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें।